All right, so yesterday we did few examples. Now we will formally define what is the role of path test. So as I have mentioned many times, path test is going to help us either getting the guess of the limit or showing that limit is not existing. Path test cannot be shown at any time for the existence of the limit. So let us write like this: path test for path test for non-existence of limit. Okay. So I already gave you this example, which we can see again. If I need to evaluate limit x comma y tending to 0 comma 0, say 2xy upon x square plus y square. So using path test, we can immediately show that the limit of this function do not exist at 0, 0. So if I choose the path y equals to mx, and why we are choosing y equals to mx? Because it is passing through 0, 0. You should not choose a path which is not passing from the point where you are evaluating the limit. So if you go for y equals to mx, then this will turn out into limit x tending to 0. It will turn into single variable case 2x square m upon x square plus m square x square, and which is going to give us 2m upon 1 plus m square, which is not unique because you can change the value of m and you will get different limits. So the limit of this function do not exist. Okay, let me do one more example, and suppose we have limit x comma y tending to 0 comma 0. You got this situation: x square y upon x to the power 4 plus y square. Okay, so here if you take the path y equals to m x square. Okay, so this is kind of, we need some natural intelligence while choosing the path, because again y equals to mx square, actually it's a family of parabola and it passes through 0, 0. So it's a valid path to be chosen for this function. So what will happen? This will turn out into limit x tending to 0 x square into mx square divided by x to the power 4 plus m square x to the power 4, which is limit x tending to 0 mx to the power 4 upon x to the power 4 into 1 plus m square. X to the power 4, x to the power 4 cancelled out, and it came out to be m upon 1 plus m square, which is again not unique. Not unique. So this limit also does not exist. Okay, so these are the examples where by choosing suitable paths we can show that the limit of the given function do not exist.
Okay. Now there are several properties of limit of function of two variable. Properties of the limit of the functions of two variables. Okay. Let fxy and gxy be two functions. Let fxy and gxy be two functions defined on a domain D on a domain D with limit x comma y tending to x naught comma y naught fxy equals to L and limit x comma y tending to 0 0 gxy equals to M. Then following properties are satisfied. Limit x comma y tending to x naught comma y naught fxy plus minus gxy equals to L plus minus M. Second is limit xy tending to x naught comma y naught. K is a scalar or constant. K fxy equals to KL. And third, limit xy tending to x naught comma y naught into the product of fxy and gxy equal to L into M. And the fourth property is the ratio. Limit x comma y tending to x naught comma y naught fxy upon gxy equals to L upon M provided M is not equal to 0. And fifth property is limit xy tending to x naught comma y naught fxy to the power n equals to L to the power n. And sixth is limit xy tending to x naught comma y naught nth root of fxy. This is equal to nth root of L. Okay, and L must be greater than or equal to 0.
and n also greater than 0. So these are few properties which looks trivial, but it's worth to list them out. So wherever we'll be dealing with this kind of situations, we can use these properties to simplify the limits. Now, the another concept is the concept of repeated limits. Repeated limits. Repeated limit means we are going to use the limit sequentially. So let us define like this. Let fxy be a function. Be a function defined in some defined in some NBD stands for neighborhood of a comma b. Neighborhood means in the nearby points of a comma b. Then limit x tending to a, limit y tending to b, fxy if exists is called the repeated limit. This is called the repeated limits. The order of the limits we can change. It means we can write in this way as well. Limit y tending to b, limit x tending to a, f of xy. If the repeated limits, this actually the limit which we learned so far, it is called the simultaneous limit. Means both x and y, they are together approaching to the point of limit, say it is a comma b. But if they are approaching one by one, then that is called the repeated limit. Okay. In general, these two limits may not be equal. Means limit x tending to a, limit x tending to a, limit y tending to b, f of xy. This in general may not be equal to the limit of y tending to b, limit x tending to a, f of x comma y. They may not be equal in general, okay, but sometimes they are equal. If the repeated limits are not equal, if it is happening that they are not equal, then simultaneous limit will not exist. What I mean to say, if this is true, this repeated limits are not equal, then this limit x comma y tending to a comma b, fxy, it will not exist. It does not exist. Okay. So this is also a way, if you see and if you can observe that the repeated limits are not equal for a particular function, then the simultaneous limit definitely will not exist. But in case repeated limits are equal, then still we cannot say that the simultaneous limit will exist. So how can we use it?
If the repeated limits are not equal, then immediately we can confirm that the simultaneous limit will not exist as well. But in the case the repeated limits are equal, then we further need to investigate whether the simultaneous limit will exist or not. So let us do an example which will enhance our understanding. Suppose fxy equals to 3xy upon x square plus y square. X square plus y square, and we have limit x comma y tending to 0 comma 0 fxy. Okay, so we have just seen this kind of example, and we know that it is not it does not exist. By simply using the path y equals to mx, one can do the calculations. We have already did it multiple times. But let's see what are the repeated limits. So if I go for limit y tending to 0 and limit x tending to 0, 3xy upon x square plus y square. So whenever you put 0, everything will become 0. And what you will get 0. And on the other hand, if you take limit x tending to 0, limit y tending to 0, 3xy upon x square plus y square. Okay, so again, when you first put the y equals to 0, this entire value will become 0 and this is equal. So this is a counter example where the repeated limits are equal, but still simultaneous limit do not exist. Okay, so that was few definitions and properties for limit of function of two variables. And now let us discuss the, okay, I can take few queries at this time. Yes, Keshav. गुड आफ्टरनून सर। बताइए। सर इस क्वेश्चन में y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यों नहीं ले सकते, कोई मतलब पीरियोडिक फंक्शन, वो भी तो 0 0 से पास होगा। ले सकते हैं आप y इक्वल्स टू साइन एक्स, बट उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो और कॉम्प्लेक्स होगी, आसान नहीं होगी। ओके। अगर आप y इक्वल्स टू साइन एक्स लेके ट्राई करेंगे तो यू विल अचीव एट द सेम कंक्लूजन। ओके, बट इन केस व्हेन यू आर चूजिंग y इक्वल टू साइन एक्स, आपका कंप्यूटेशन उतना आसान नहीं होगा। ठीक है। सर एंड ऐसे पूछना, मतलब अगर जैसे y इक्वल्स टू एक्स की जगह हम जैसे x इक्वल्स टू सम फंक्शन एंड y इक्वल टू सम फंक्शन ले लें जो बोथ 0 0 पे वो भी 0 0 बन रहे हो। अगेन जस्ट से इट अगेन व्हाट यू सेड। सर जैसे अभी आपने y इक्वल टू साइन एक्स मना कर दे, अगर ऐसा फंक्शन ले लें जैसे x इक्वल टू साइन एच एंड y इक्वल टू टेन एच, दोनों 0 0 पे 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो वैसा मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, चेंज ऑफ वेरिएबल हम कर सकते हैं, बट आप जो बता रहे हो दैट इज सब्स्टिट्यूशन, नॉट चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ओके। ओके सर, थैंक यू सर।
अंकित सर पेज नंबर 28 पे एक बार स्लाइड कीजिए तो। हाँ बताइए। हाँ सर, इसमें जो सर आप एक है कि लिमिट एक्स वाई टेन टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, और हम्म, दूसरा है लिमिट एक्स वाई टेन टू जीरो नहीं जीरो नहीं जी एक्स वो सॉरी वाई। सॉरी सॉरी इट्स टाइपो। दिस इज आल्सो x नॉट कॉमा y नॉट। हाँ सर, दैट वाज माय डाउट। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग इट। दिस इज x ओके नॉट कॉमा y। ठीक है। सर, एक और क्वेश्चन था। बताइए। सर वो हम लोगों को आइडिया कैसे लगेगा कि कौन सा पाथ लेना है, मतलब इंट्यूशन कैसे आएगा उसका? जैसे आपने आ, वाई। इसके लिए देर इज नो एनी फिक्स्ड रूल। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा, यू विल गेट द आइडिया। लाइक जैसे आप द वे यू लर्न इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में कौन सा मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं या पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, व्हाट यू नीड टू डू, देयर इज नो यस। specified rule, but over the time थ्रू you practiced it and you mastered it. The same thing, same way ओके, here as थैंक well. Okay. ओके सर। Okay. गर्व। वो 27 પછી સ્લાઇડ ખોલना। कौन सा पेज? 27। यस बताइए। बस स्क्रीनशॉट ले आंदा। अच्छा ओके। आर्यन। For with regards to paths, does the path have also have to be continuous in order? What, Aryan, can you repeat your question? When we are choosing a path, does the path also have to be continuous? If you take discontinuous path, then how you will reach to the point where limit you are evaluating? I could make a step function. आप स्टेप फंक्शन बनाओगे तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे जाओगे? जो बीच में गैप होगा, हाउ यू आर गोइंग टू फिल दैट? सर यस। इक्वल टू mx स्क्वायर जो ये हमें हर क्वेश्चन में डाउट। What, can you repeat question? रंजन। सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, पाथ का टेस्ट कैसे करेंगे सर? ये यहाँ पे जैसे 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर नॉट यूनिक सर क्यों लिख दिए हैं? फिर सर हर हर क्वेश्चन में नॉट यूनिक इसलिए लिखा है क्योंकि जो लिमिट आई वो m का फंक्शन आ गया। अब y इक्वल्स टू एम एक्स क्या है? इट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आप हर बार नई लाइन चूज करोगे, यू विल गेट अ डिफरेंट लिमिट। इट्स लाइक कि आप LHL निकाल रहे हैं, कुछ और आ रहा है, RHL निकाल रहे हैं, कुछ और आ रहा है। If that is the case, then that is a scenario where we say limit is not unique, hence it is not existing. सर लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना होगा? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको सारे पाथ से एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसके लिए आपको अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। सी व्हाट वी आर डूइंग, लिसन मी यहाँ केयरफुली। पे मेरी बात सुनो पहले रंजन। पाथ टेस्ट से हम ओके सिर्फ सर। ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करवाना हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें अपसाइलन डेल्टा मेथड यूज करना पड़ेगा, द वे वी यूज्ड अर्लियर। ओके।
ओके सर, तो मतलब वही समझ में नहीं आ रहा सर कि ये मतलब कैसे करेंगे, कि कब मतलब पता चलेगा पाथ टेस्ट से कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब नहीं करेगी। नहीं, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट टू नो कि दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप सर इसके फंक्शन लिए को देख के थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या कौन सा पाथ मुझे चूज करना चाहिए। सर जिससे हर इक्वेशन हर क्वेश्चन के लिए सर जैसे y इक्वल टू एम एक्स या y इक्वल टू एक्स चूज करते हैं सर, इसमें नीचे वाले एग्जांपल में y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर क्यों लिए? क्योंकि आई ऑब्जर्व दैट कि अगर mx स्क्वायर लूंगा तो इट इज ऑल्सो अ पाथ विच इज पासिंग थ्रू 0 0 फैमिली ऑफ पैराबोलास, और उस केस में ये m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया जो कि यूनिक नहीं है। सर इसको y इक्वल टू एम एक्स लेकर भी बना सकते थे, कर सकते थे। आप y इक्वल्स टू एम एक्स लेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा ना, ये इट विल रिमेन 0/0 टाइप। सर इस ओके जो सर पहला वाला एग्जांपल है सर, इसमें y इक्वल टू एक्स ही सिर्फ डाल के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मतलब m को 1 ले लें। तो आप m को 1 ले लोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 1 मिल जाएगा, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। तो फिर डेफिनेशन इसका में दिक्कत मतलब आएगी क्या सर। हुआ, इस नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट ट्राई टू मैच इट विद द LHL एंड RHL सिनेरियो। आपने y इक्वल्स टू एक्स के लॉन्ग इवेल्युएट किया तो 1 आया, y इक्वल्स टू 2x के लॉन्ग करेंगे तो कुछ और आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि LHL तो 1 आया और RHL कुछ और आया। इफ LHL एंड RHL आर नॉट मैचिंग देन व्हाट यू कंक्लूड, लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग। सर तो जो बाकी केस हमने किए सर उसमें y इक्वल टू एक्स लिया था ना डायरेक्ट, तो उसमें भी अगर mx ले लेते तो फिर ये चीज़ तो उसमें भी हो जाती, m का आ, फंक्शन। लेते नहीं, यू शुड टेक इट, देन यू शुड अंडरस्टैंड। आप उसमें लेके देखो y इक्वल्स टू mx क्या आता है। जो ठीक है भी सर। एग्जांपल हमने किया है आप एक बार y इक्वल्स टू mx लो, देखो फिर क्या आता है। ठीक वही है है सर। जो y इक्वल्स टू x लेने पे आया है, वही है। रामदयाल। सर अगर जीरो आ गया, सर अगर y इक्वल टू एक्स लिए, अगर उसका ये पाथ टेस्ट का वैल्यू जीरो आ गया तब सर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज अगर दूसरा कोई वैल्यू आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं भाई, ये नहीं समझा रहा हूं मैं कब से, मैं ये समझा रहा हूं अगर पाथ टेस्ट आपने यूज किया और कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, तो यस सर। अगर मान लो यूनिक वैल्यू आ रही है, आपने एक पाथ टेस्ट यूज किया और उससे एक सिंगल ही वैल्यू आ रही है, तो उससे आपको गेस मिलता है कि इसकी पॉसिबल लिमिट ये हो सकती है। अब उस गेस को प्रूफ करने के लिए आपको अब साइलेंट डेल्टा मेथड पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बट अगर पाथ टेस्ट से ही हमें ये पता चल रहा है कि यूनिक नहीं आ रही है, तो वहीं से हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सर कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहे हैं। आप एक बार केयरफुली जो मैंने लेक्चर नोट्स दिए हैं उसको पढ़ोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट सिट एंड सर रीड द थिंग्स केयरफुली। सर ये जो हमने ब्रेकअप वाला फंक्शन किया था ना जिसमें एक जीरो था, सर उसमें मैंने एम एक्स लेके देखा, सर उसमें m का फंक्शन बन रहा है लेकिन कंटिन्यूस ही आ रहा था, वो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। कौन सा एग्जाम्पल बताइए। जो एक्स इंटू वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ सर ये हाँ, वाला। आपने जब y इक्वल्स टू mx लिया तो क्या आया लिमिट इसकी। m इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1। ये एक्स वाई भी तो है इसके साथ। हाँ तो सर m रह गया ना वहाँ पे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप ये ऊपर x टू द पावर 4 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। अब आप x टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा। अच्छा मैंने एक दो काट दिया, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। रामदयाल। यश। सर एक बार रिपीटेड लिमिट्स का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। रिपीटेड वैल्यू लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप दोनों पॉइंट्स पे सीक्वेंशियली उसकी लिमिट निकालो। पहले x टेंडिंग टू a इवेलुएट कर लो, फिर y टेंडिंग टू जो भी वैल्यू है, ठीक है। इतना ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है।
ओके सर। दिव्यांश, Sir, the statement which you have told about simultaneous limit and repeated limit, can you please repeat? व्हाट इट सेज कि अगर आपकी रिपीटेड लिमिट्स अनइक्वल हैं तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, अगर इक्वल है तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। हाँ, इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट अगर इक्वल Yes. है देन इट मे एग्जिस्ट, इट मे नॉट एग्जिस्ट। अगर सर अच्छा अगर साइमल्टेनियस लिमिट और रिपीटेड लिमिट सब इक्वल है, अगर कि सबकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो सब। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग कि साइमल्टेनियस लिमिट तो हमें पता ही नहीं। हम ये Yes. कह रहे हैं कि अगर रिपीटेड लिमिट्स आपस में मिसमैच हैं, दे आर नॉट इक्वल, देन इमीडिएटली वी कैन कंक्लूड कि जो साइमल्टेनियस लिमिट होगी इट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, Yes. Yes, sir. on the other hand, if the repeated limits are equal, then we need to further investigate whether simultaneous limit will exist or not. It may exist, it may not exist. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. वैभव अग्रवाल। सर पहले वाली स्लाइड निकालना। दिस वन नहीं, जिससे सर अपने क्लास स्टार्ट की थी। हाँ ये वाली। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये यूनिक कब होगी? ये समझ नहीं आ रहा सर, हम इसमें करना क्या चाहते हैं फाइनली? हम कोई फंक्शन गिवन है उसकी लिमिट निकालना चाह रहे हैं, बस इतना करना चाह रहे हैं। सर ये यूनिक कब होगा? यूनिक तब होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सर कोई एग्जांपल लेके बताओ ना सर। ये सारे एग्जाम्पल यही तो हैं जो पहले हमने कर रखे हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें यूनिक है, अब जीरो ही मिलेगा आपको। यूनिक के एग्जाम्पल तो हमने पहले किया ना। ये जो अभी स्लाइड आप देख रहे हो, इसमें जो फंक्शन है, या इससे पहले भी आई थिंक हमने कर रखा है, नॉट दिस वन। ये जैसे फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनमें यूनिक ही आ रही। ठीक है, ओके सर, पर वो तो सर एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसमें हमको यूनिक में मतलब अगर जीरो आ जाए तो यूनिक है। नहीं, यूनिक का मतलब क्या है? नॉट यूनिक का मतलब ये है कि अगर हम जो पाथ चूज कर रहे हैं, अगर उस पाथ को बदलते रहें तो हर बार एक अलग अलग वैल्यू आ जाए। मतलब ये है कि जैसे सपोज यू वांटेड टू अप्रोच टू न्यू दिल्ली, अगर आप नॉर्थ से जाते हो तो कुछ और वैल्यू आती है, साउथ से जाते हो कुछ और वैल्यू आती है, ईस्ट से जाते हो कुछ और वैल्यू आती है, वेस्ट से जाते हो कुछ और वैल्यू आती है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट यूनिक। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये क्या हो गए? ये पाथ हो गए। अगर हर एक अलग अलग डायरेक्शन से अप्रोच करने पे अगर आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही है, तो दैट इज द केस वी से लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग बिकॉज इट इज नॉट यूनिक। अगर आप सारे पाथ से जाओ और एक ही लिमिट मिले, देन दैट इज द केस लिमिट इज एग्जिस्टिंग। बट उसको प्रूफ करने के लिए हमें अपसाइलन डेल्टा यूज करना पड़ता है। ओके सर, ओके। ईशा, So on slide 27, so for the second question, if we choose the path y equals to mx and if we substitute that in the function, then we get mx upon x square plus m square. Now for x tending to 0, this value will be 0. But sir, if we choose another path, so if we choose another path y is equals to mx cube, then in that case the function will become mx upon 1 plus m square x square. Now for x tending to 0, this is also tending to 0. So we have chosen two paths and then we have checked. So we are getting unique. Is it right? नहीं नहीं, आप आपने जैसे पहले चूज किया y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक Yes है, sir, तो y second इक्वल्स point. टू आप चूज करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब एम अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस
m square x square. Yes, sir. So ठीक, this will become mx upon x square plus m square. mx upon x square plus m square. Yes, अब sir. अगर x tending to 0 पे this will approach to 0. ठीक Yes, है. sir. और अब on the other hand if you are choosing y equals to mx cube, Yes. mx cube अगर आप यूज करते हो तो आपको मिलेगा x square into mx cube upon x to the power 4 plus m square x to the power 6. Yes, ठीक sir. है. और ये आपका हो जाएगा x to the power 4 कैंसिल हो जाएगा, it will become mx upon 1 plus m square x square. 1 plus m square x square. This is also approaching to 0. Yes, sir. बट इसमें हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास एक क्लास ऑफ पाथ है ऑलरेडी जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यूनिक नहीं है. इट इज नॉट गिविंग अस द सेम लिमिट. इसका मतलब क्या है, आप इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली, सपोज ये पॉइंट है जिसमें हम अप्रोच करना चाहते हैं. ये वाला पाथ था आपका, डायरेक्शन था y इक्वल्स टू mx, इससे आपको 0 मिल गया. और ये वाला डायरेक्शन था y इक्वल्स टू mx क्यूब, इससे भी आपको 0 मिल गया. ठीक है. Yes. बट हमारे पास एक ऑलरेडी पाथ ऐसा था y इक्वल्स टू mx स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटेशन कर रखा है. इसके अलोंग जब हम जाते हैं तो हमें यूनिक लिमिट नहीं मिलती है. तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो जब भी हम लिमिट का एग्जिस्टेंस प्रूफ करते थे तो हम पाथ से जो लिमिट आती थी उसको सिर्फ एक गेस मानते थे. उसका कंप्लीट कंफर्मेशन हम तभी करते थे जब उस पर एप्सिलॉन डेल्टा का सिनेरियो फिट हो जाए. बट अगर मल्टीपल पाथ से ऑलरेडी हमें मल्टीपल लिमिट्स मिल रही हैं तो हमें फिर एप्सिलॉन डेल्टा पे जाने की जरूरत नहीं है. वी कैन इमीडिएटली कंक्लूड. तो आइडिया यही है कि आपके वन वेरिएबल केस में तो सिर्फ LHL और RHL था. इफ दे आर नॉट इक्वल, लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग. बट टू वेरिएबल के केस में यू हैव इनफाइनाइटली मेनी वेज. और अगर किसी भी दो रास्ते से आपको डिस्टिंक्ट लिमिट्स मिलने लगती हैं, यू कैन इमीडिएटली कंक्लूड कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो y equals to mx square is not a single way. You keep on changing the values of m, it will give you different directions और different paths. उन सारे पाथ से आपको लिमिट अलग अलग मिल रही है. फ्रॉम देयर वी आर कंक्लूडिंग कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. Yes, sir. So can we come at a conclusion that the path has to be chosen in such a manner that the function becomes independent of x and y? Function becomes Independent of x and y. exactly. That is मतलब informally you can understand like that. If you are able to choose path in such a way कि आपका जो x और y है वो पूरी तरह से एनहिलेट हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो जैसे ही वो m का फंक्शन बनेगा इट विल नॉट रिमेन यूनिक. ओके. Yes, sir. Thank you, sir. रिंकू. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो सेकंड वाला एग्जांपल था जहाँ पे हम लोग y इक्वल टू mx लेकर अगर 0 आ रहा है तो उसको एप्सिलॉन डेल्टा से सर कैसे प्रूफ करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही? वो एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ होगा ही नहीं. जैसे मैं आपसे कहूं कि आप जो है कोई ऐसा टास्क करो जो इम्पॉसिबल हो. ओके. इफ आई आस्क यू इवेल्युएट 0 टू द पावर 0, तो आप नहीं कर पाओगे इवेल्युएट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. तो जो फंक्शन अगर जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो उसमें अगर आप ब्रूट फोर्सली एप्सिलॉन डेल्टा को फिट करने जाओगे तो यू विल नेवर बी एबल टू डू सच कंप्यूटेशन जो हम कर पाते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है. आप मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल, अब एल आप क्या लेके चलोगे? सबसे पहला डाउट तो यही है. जब हमें एल ही हमें पता है कि इट इज नॉट फिक्स्ड, ये हर एक पाथ से बदल रही है, यू इवन कांट start the first step of epsilon delta. तो इसीलिए तो अगर हमें जैसे ही पता चल गया पाथ टेस्ट से कि लिमिट वेरी कर रही है, इट इज नॉट यूनिक, तो हमें epsilon डेल्टा पे जाने की जरूरत ही नहीं. वी कैन इमीडिएटली कंक्लूड. ठीक है. ओके सर. जसकीरत. हेलो.
बोलिए। सर वो एक अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आपने कराया था उस पेज पे प्लीज चलिए। ओके, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, हाँ बताइए। हाँ वो जो रूट एन एल लिखा हुआ है ना, nth रूट, वहाँ पे अगर एन ऑड हो तो एल 0 से बड़ा होना जरूरी नहीं है ना? एन अगर ऑड हो। हाँ हाँ, आई थिंक दिस नोट आई मिस्ड, एक मिनट में अपडेट करता हूँ। If n a positive integer and if n is even, then L must be greater than 0. हाँ जी अगर n सर। odd है, then L can be anything. ये सर। एंड सर एक और डाउट था कि वो जो पाथ टेस्ट करते हो उसका अगर आप प्लीज़ एक विजुअलाइज, एक एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल, ताकि हर क्वेश्चन में कुछ वैसा दिमाग में चल सके। जैसे हम पाथ टेस्ट करते हैं और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स सही नहीं कर रही है, तो मतलब वो एक बार विजुअलाइज हो जाए कि यहाँ से कुछ और आ रही है, मतलब कुछ वैसी कुछ मतलब डायग्राम दिख जाए। ये विजुअलाइज हो जाएगा इफ यू आर वेरी मच ओके विद द कॉन्सेप्ट ऑफ LHL एंड RHL। अभी तो यही चीज तो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप किस पॉइंट पे 25 पाथ से जा रहे हो और हर एक पाथ से आपको, और ये पाथ क्या है, ये LHL और RHL का एक्सटेंशन है, उसका इनहेंस्ड कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास सिर्फ LHL और RHL ही नहीं है, वी हैव इनफाइनाइटली मेनी वेज। अगर हमें अलग अलग तरीके से आने से इस पॉइंट पे अलग अलग लिमिट्स मिलने लगती हैं, तो इसका मतलब क्या है, द सेम थिंग, द सेम रीजन, सेम लॉजिक, वाई लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग, which we have understood in the case of LHL and RHL। LHL और RHL अगर सेम नहीं है तो हाउ वी कंक्लूड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। the same ideas we are using here, the only difference is यहाँ पे LHL और RHL का कॉन्सेप्ट वो enhanced है, it हाँ is जी। not only left and right, it is हाँ जी। from the infinitely many directions। okay, हाँ जी। ये यही विजुअलाइजेशन है, not more than that। okay, हाँ जी ठीक है। नहीं ऐसे कॉन्स्टिपेटेड नहीं होना है। आप अ, just try to, because these are abstract concepts, just अ, try to visualize and try to match it with the single variable case, you will totally be able to visualize it। नहीं, सिंगल but वेरिएबल में ये होता है कि एक प्लेन geometry होता है नहीं है। ना, एक्स एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पे आप ये जो डायरेक्शंस बना रहे हो ये एक एक प्लेन काट रही है ना? नहीं 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 नहीं, ये आप गलत समझ रहे हो। नहीं जैसे ही उसी टू तरीके से। वेरिएबल का फंक्शन हो जाता है तो आपका क्या हो गया, डोमेन एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। डोमेन एक्स वाई प्लेन हो गया, तो ये ऐसा कोई फंक्शन है, ये एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई विल बी लाइक दिस। हाँ जी सर। ओके, अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ए कॉमा बी है, तो इस पे अप्रोच कर रहे हैं हम, इस प्लेन में इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं, तो हाँ जी जो सर। ये डायरेक्शन है वो उसी प्लेन में ही है, जितनी भी डायरेक्शन है उसी प्लेन में ही है, फ्रॉम अदर अदर डायरेक्शंस। ऐसा नहीं है कि प्लेन को फाड़ते हुए बाहर आ रही है डायरेक्शन, जो एक्स अच्छा वाई जी। प्लेन है, अच्छा अच्छा they अच्छा। all directions are lying in xy plane। अच्छा क्योंकि ठीक है डोमेन सर। ही वही है, हमारा डोमेन के बाहर तो हम सोच नहीं सकते। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और जेड की वैल्यू एक फिक्स्ड है, लेकिन मतलब जेड इज इक्वल टू z कुछ। z is the axis where the surface of the function is floating, z equals to fxy, जैसे y हाँ जी। equals to fx था, तो आपका x एक्सिस और y एक्सिस, बट यहाँ पे z equals to fxy है, that's why we have domain xy plane and range कहाँ है, z एक्सिस पे। तो हाँ जी। depending on the definition of fxy you will have this kind of curve। okay, I'll try to show you some because we are doing it virtually। आपको कुछ प्लॉट्स में दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पे आपको कुछ आइडिया लगेगा, ठीक है। ठीक है बट थैंक यू सर। my intuition is to let you realize and feel abstractly, because always you cannot Sir, can we visualize leave? the surface and graph। yes, those who are done they can leave because the class time is over। okay, Ujjwal, okay, he left।
Okay, before you left, I want to announce when you fill your attendance form, make sure you write your full roll number and fill the roll number at the specified place. Do not swap. Like at the place of roll number, you are writing name, and at the place of name, you are writing roll number. Then that would be a mismatch of the data, and you may be marked as absent. So that was all for today. See you tomorrow in the next lecture.